Hello everyone. Let us start our day with one inspirational quote. Do it now. Sometimes later becomes never. I repeat, do it now. Sometimes later becomes never. So that we have already studied in our previous standards. There are three types of angles: right angle, acute angle, and obtuse angle. An angle whose measure is 90 degree is called as right angle, and an angle whose measure is less than 90 degree is called as acute angle, whereas an angle whose measure is more than 90 degree is called as obtuse angle. So how can I read this angle? Angle ABC, where the vertex lies, that letter should be in the middle of your name. Here also, how will you read this angle? Angle TSR, or you can also read angle RST. Okay. Another way, obtuse angle, how will you read? Angle NML, or angle LMN. Can you see the difference between these three angles? First is of 90 degree, exactly 90 degree. Second is lesser than the 90 degree, and third is bigger than the 90 degree. Okay, so these are the three different types of angles. Now move on to the next topic, that is parallel lines. Can you see the bars on the window? The bars on the window are parallel to each other. Okay, these steps on the ladder are also parallel to each other. The vertical legs are also parallel to each other. Okay, ये जो steps है जहाँ पे हम खड़े होते हैं वो सारे एक दूसरे को पैरेलल है, और ये जो वर्टिकल बार्स है ये भी एक दूसरे को पैरेलल है. The lines traced here are parallel to each other. Okay, can you see these lines? 1, 2, 3, 4 and 5. All these lines are parallel to each other, whereas the line parallel to this line is this line. ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, और ये सारी लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है. The lines shown alongside are not of equal length, yet they are parallel to each other. Now you can see these two lines are not of equal length. पैरेलल होने के लिए दोनों लाइंस की लेंथ सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. अब कहीं से भी गिनो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, देन दे आर पैरेलल. ओके, सो पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे डू नॉट कट ईच अदर, नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड. सो पैरेलल लाइंस को आप कितना भी बड़ा ड्रॉ करो, कितना भी बड़ा खींचो उसको, वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है. दे डू नॉट इंटरसेक्ट माने कभी भी मिलती नहीं है. ओके, उसके लिए दोनों की लेंथ सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेम है तो इन दो दे आर पैरेलल लाइंस. ओके, सो द अपोजिट एजेस ऑफ द रूलर आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर मैंने यहाँ पे रूलर रखा और उसके दोनों साइड मैंने अगर लाइन ड्रॉ की, देन इट विल लुक लाइक दिस, and they both are parallel. And then you can say the distance between these two lines you can measure from any point, they will always be equal, that's why they are parallel. Same way perpendicular lines. Okay, the angle formed by a pole and its shadow on the ground is 90 degree or a right angle. Okay, can you see one horizontal line, vertical line and horizontal line? The shadow is horizontal whereas the pole is vertical. So such type of angle whose measure is 90 degrees called as the right angle. And when two lines are or two objects are at right angle to each other, then they are called as the perpendicular lines. Okay, so when the two lines are forming an angle of 90 degree or right angle, then they are called as the perpendicular lines. Okay, so similarly adjacent sides of wooden planks और बुक्स ऑल्सो फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, एडजेसेंट का मीनिंग क्या हुआ? जिसकी कॉमन वर्टेक्स है. ओके, ये देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, हेंस दे टू बिकम्स एन एडजेसेंट लाइंस. ये दो लाइंस एडजेसेंट साइड है. ओके, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वॉल समझ में आती है आपको, घर की कॉमन वॉल, उनको एडजेसेंट बोलते हैं, नेबर्स बोलते हैं. वैसे ही यहाँ पे नेबर्स बोलते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट बोलते हैं. जिनके बीच में कॉमन वॉल हो उसको
नेबर्स, जैसे उनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. सो व्हेन टू लाइन्स फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टू शो दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर अ सिंबल एज शोन इन द फिगर इज ड्रॉन बिटवीन देम. कौन सा सिंबल है राइट एंगल दिखाने के लिए? सी दिस सिंबल. This shows us that the angle between them is right angle. The angle between any two adjacent side of your notebook is also right angle. See adjacent sides, any two adjacent sides. The angle between any two adjacent sides of your blackboard, your door, anything is a right angle. Since it is a right angle, the two sides are perpendicular to each other. Okay, so they are perpendicular है means उनके बीच का angle जो है वो right angle होगा. Let us move on to problem set 27. Give two examples of parallel lines you can see in your environment. So examples of parallel lines are bars on the window, horizontal lines in the notebook. Lines जो होती है हमारे नोटबुक के बीच में देखो, हॉरिजेंटल लाइन जिसके ऊपर हम लिखते हैं वो भी एक दूसरे को पैरेलल है. आप उसको कितना भी एक्सटेंड करो वो एक दूसरे से नहीं मिलने वाली है. ओके, दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल. स्टेप्स ऑन द लैडर, vertical legs on the ladder, opposite edges of the blackboard. Okay, so all these are examples of parallel lines. Give two examples of perpendicular lines you can see in your environment. Examples are adjacent sides of your notebook. Okay, just now we have seen adjacent sides of your notebook. You can also say door, you can also say your table. The adjacent sides of your table, laptop, book, copy, your compass, they all forms a right angle. So adjacent sides of your blackboard, the angle formed by a pole and its shadow on the ground are also right angle. So they are perpendicular to each other. So in this way today we have seen the topic, that is types of angles and perpendicular lines and parallel lines. In our next video, we will start with the new lesson. Write down everything in your classwork copy. Thank you.